बट होता क्या है, इवन इंडिविजुअली आप जाके जजेस से बात करो या किसी से बात करो, दे ऑल सेंट्रिस्ट इन बाय नेचर, बट द फैक्ट इज दैट we are not able to attract their attention. Gradually we will strengthen ourselves. जब वो देखेंगे कि हमारी वॉइसेस इकट्ठा हो रही हैं, लॉयर्स इकट्ठा हो रहे हैं, डॉक्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं, ट्रेडर्स इकट्ठा हो रहे हैं, ट्रेड यूनियंस इकट्ठा हो रहे हैं, बार एसोसिएशन इकट्ठा हो रहे हैं, फिकी एसोसिएशन, जितने ये ट्रेडिंग एसोसिएशन है, सब हो रहे हैं, यू विल सी अ चेंज. बिकॉज हम सेंसिबल बात कर रहे हैं, हम समझदारी की बात कर रहे हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. हम तो चाहते हैं इस देश में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे. हम चाहते हैं इस देश में जो अन्याय हो रहा है, जो स्पेशली जो अब जैसे किसी ने सुप्रिया जी ठीक बोल रही थी और उसके पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, अनुपम बोल रहे थे, नीट वगैरह में जिस प्रकार का अन्याय बच्चों के साथ हुआ है, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी हाईलाइटेड. एंड जो आप लोग का ये एफर्ट है, इसको मैं इसके लिए आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ. और इसका सबसे पहला चरण व्यापम था. जब हम लोग ने व्यापम उठाया था मध्य प्रदेश में, और जिसमें व्यापम की डेथ्स सामने आई बाद में, हमको आज भी याद है जब हम व्यापम की लड़ाई लड़ने निकले थे तब हमको भी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलती थी. बट जैसे जैसे हम लोग कोर्ट में बहस करते चले गए, और हमारे साथ एक अच्छी टीम ऑफ लॉयर्स भी थी, और ग्राउंड में यूथ कांग्रेस थी, हम बहस करते थे जबलपुर में, और यूथ कांग्रेस के लड़के भोपाल में प्रदर्शन करते थे और बैटल चलते थे. और ये तो जब दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी तो ऑटोमेटिकली उसकी टीआरपी बनती जा रही थी. सो इट हैज टू बी अ वेरी कोऑर्डिनेटेड एक्शन इफ यू वांट टू कम बैक. एंड आई स्टिल रिमेंबर व्यापम वाज वन थिंग विच ब्लैकेंड द फेस ऑफ बीजेपी इन मध्य प्रदेश. खाली व्यापम से हम जीत नहीं सकते थे, बट व्यापम वाज वन बिग रीजन व्हाई बीजेपी लॉस्ट इन 2018. उसके अलावा इट वॉज ऑल्सो किसान, इट वॉज ऋण माफी, और लास्ट में जो मंदसौर फायरिंग हुई जिसमें बहुत सारे किसानों की डेथ हुई, दैट वॉज आइसिंग ऑन द केक. तो अल्टीमेटली इस सब होने के बाद भी हम लोग 114 तक ही तो पहुंचे थे. इट वॉज जस्ट ऑन द मार्जिन. इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि इतने सब परिश्रम के बाद भी यू आर फाइटिंग अ वॉर मशीन, एंड वो वॉर मशीन को पिछाड़ने के लिए you have to put all your resources in command, and उस resources से ही आप आगे बढ़ पाएंगे. As a lawyer, I can advise you, the court का jurisdiction is always there. Of course, courts conservative होती हैं, courts एकदम से सामने नहीं आती हैं, court एक बड़ी लड़ाई में एकदम से घुसना नहीं चाहती हैं. But अगर आप persistent हो और आप अपनी बात बार बार बोलते जाओगे, तो कोई भी व्यक्ति कहीं है तो इंसान, उसमें वो पिघलता है और आपकी बात थोड़े दिन बाद सुनने लगता है. देखिए कल बॉम्बे हाई कोर्ट के, परसों बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने क्या बोला, जस्टिस व्हाट्स हिज नेम, जामदार, जस्टिस जामदार ने, कोई सोच सकता था एक आपको मालूम बॉम्बे के डीएम ने एक व्यक्ति को इसलिए महाराष्ट्र बॉम्बे से एक्सटर्न किया, एक्सटर्न मीन्स जिला बदल, क्योंकि वो प्रोटेस्ट में स्लोगन्स उठाए, वो लोग उठाते थे कि अमित शाह मुर्दाबाद एंड बीजेपी मुर्दाबाद. तो जज ने कहा क्या स्लोगन्स रेस करना भी क्या इस देश में अपराध है? फिर प्रजातंत्र किस बात का? फिर यू आर स्लेव्स, यू आर नॉट सिटीजन्स. तो एज आई सेड, अब इस प्रकार की आवाजें उठने लगी है. नोबडी, अब जो देश का प्रजातंत्र को कोई, देखिए देश का प्रजातंत्र को कोई खत्म नहीं कर सकता, और देश के प्रजातंत्र को कोई सोचता है वो बदल सकता है तो बदल नहीं सकता. मैं तो उस परिवार का हूं, जबकि हमारे पूरे परिवार का कांग्रेस से बहुत पुराना संबंध था. मेरे फादर जज थे, एंड सिटिंग एज अ जज इन 1975, ही वाज द फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया विच जस्टिस एपी सेन, जिन्होंने इमरजेंसी के अगेंस्ट पहला फैसला दिया था. एंड कांग्रेस ने कभी उसको मेरे अगेंस्ट नहीं लिया कि इनके पिताजी ने 75 में इमरजेंसी के अगेंस्ट नहीं दिया था. इट वाज ऑन आर्टिकल 21 कि लाइफ, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी नेवर कैन गेट फुली एक्सटिंग्विश्ड. तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो डिसेंट को भी एक्सेप्ट करती है, विरोध को भी बुरा नहीं समझती है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन. अपना लिबरल आउटलुक को कभी नहीं खोओ.
you are in the right space, in the right place. Only thing is संगठित हो, and संगठित होके planned way में अपने 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 struggle को आगे बढ़ाओ, be it legal, be it institutional, be it political. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you for your. Thank you for your words of wisdom, sir. We'll definitely try to keep those in mind while moving forward. The next speaker does not actually need an introduction to the Youth Congress family. He is the man who was the brain behind Indian Youth Congress legal cell. It was with his support that we could form such a team. It was the encouragement he gave, the instructions he gave, and the direction he gave that we could form the Youth Congress legal cell. We have worked very closely with him. Now, I would like to warmly welcome Shri Krishna Allavaru, in charge Bihar Pradesh Congress Committee, to address. Sir, please. That dream involves getting a good education, cracking a tough exam, and after that, getting a great job. Today, that dream, that shared collective aspiration is being destroyed, is being burnt. For most of us Indians, education is not just a choice. For many of us, it's a ladder out of poverty. Examinations are a ladder to employment. And education and examinations for most Indians together provide a ladder to a dignified life. Every Indian family pays a... The mother sells her gold. The father takes a life-changing loan. The daughter gives up many years of her youth. And what does the system give them? The system gives them a paper leak. For a family that gave everything to the education, to an exam, finds that some criminal somewhere, nameless, faceless, has sold for 2 lakh rupees everything that the family had been struggling for. With one leak in some WhatsApp group, that child's future, the family's hard work is destroyed. But this is not just one event. It has now become a booming business. I was looking at some statistics, and a decade ago, paper leaks were just 30% of exam fraud. Now, paper leaks are over 70% of exam fraud. Now that's scaring. What it means
What it means is that the paper leak mafia is winning. The paper leak mafia is winning and the students are losing. And the government is responsible for this. From 30% to 70% in less than 10 years. But a paper leak is not just a bunch of questions that have been leaked. A paper leak is beyond that. It leaks the future of that student. In many cases, it destroys human lives. Somebody was talking about the NEET exam paper leak and the fact that 20 kids committed suicide within weeks. So a paper leak is not just questions that have been leaked. Futures are being destroyed, lives are being lost. And when we ask for accountability, we don't get it. Since 2015, please listen carefully, since 2015, almost 150 cases of major exam fraud were registered. You're a group of lawyers. Do you know how many convictions? 150 major exam fraud cases, and in over 12 years, since 2015, there has been one single conviction. One single conviction in over 10 years out of 150 major exam fraud cases. That's a 0.7% conviction rate. Now this government has got 0.7% in the exam to protect the future of India's students. They have scored 0.7% in the exam for accountability to the youth of India. And that government, which has scored 0.7%, has the audacity to give gyan via pariksha pe charcha on how to reduce exam stress. This is the most ridiculous thing that can happen. The Prime Minister and his government scores 0.7% on accountability to control exam fraud and paper leaks. And he sits year after year and gives gyan to the same students on how to reduce exam